Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all are fine and well. And this is second lecture of our subject, the history of English literature from Victorian age to modernism. And I am your instructor, Abdul Khalik. Now let me share my screen with all of you that you can know that what we are going to talk about in today's lecture. Here it is, and I think that my PPT will be visible to all of you. Yeah. So let me give you the brief introduction about some major characteristics of Victorian era. There are nine major characteristics which I have found, and I thought that these characteristics are more important to be studied in this topic. Apart from that, let me also revise few things from the previous lecture as well. Like in previous lecture, in the first lecture of the subject, we covered that how the Victorian era was started, when actually it was started, and as you remember that I gave you the two dates over there. The first was 1832, and the second was 1837 or 38. And I also told you that the Victorian era is further divided into two parts: the early Victorian era and the late Victorian era. So the early Victorian era was started from 1832 to 1870, and the late Victorian from 1870 to 1901. So this was a brief, uh, revision of previous lecture. And apart from that, I also discussed the significant impacts which Romanticism had on the writers or on the people of Victorian era. In the same way, there was the influence of classicism on the Romanticism as well. So I also gave you the background history of Victorian era, that what had happened over there and how the Victorian era came, and what were the social practices in the Victorian era. So these were the some uh, things which we discussed in a previous lecture. So in and you also, if you remember, then we also discussed the one characteristics in previous lecture as well, which was the novel. We discussed the novel in detail, that how novel was started, why the novel was given a lot of priority, why it was so much popular, and what were the impacts of novel on the minds and the feelings of the people of Victorian era. So we discussed novel in that way, and but due to some electricity problems, I was not able to continue that class for scheduled timing, because I guess the class was ended within the 40, around 40 minutes, and between 40 minutes the class was ended. So I'm really sorry for that. And now today I will try my best to explain to you these all characteristics in detail, that you might know that what actually had happened over there, and what are the impacts of these characteristics, what were the impacts of these characteristics on the lives of the people of Victorian era, what were the practices. And एक आपको चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये नहीं है कि हमने सिर्फ इन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, देन उनको क्रैम करना है, देन पेपर्स में मीन्स लिख देना है. दिस विल नॉट वर्क इन दैट वे. आपको क्या करना है कि इन करेक्टरिस्टिक्स को, या ये जो एरा हम पढ़ रहे हैं, तो उसके पढ़ने का जो कोर रीज़न है, जो कोर द सिग्निफिकेंट रीज़न है, वो ये है कि आपने उस टाइम की सोसाइटी को एनालाइज करना है थ्रू योर ओन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर आपने एनालाइज करना है उस सोसाइटी को कि क्या हुआ, कैसे हुआ. जैसे कि हमने नॉवेल्स को पढ़ा, नीचे और भी इनके जो हैं हम उनको भी पढ़ेंगे. तो उसके बाद उन्होंने वो कौन सी रॉन्ग डूइंग्स है जो उसकी उस सोसाइटी में, विक्टोरियन सोसाइटी में हमें देखने को मिली है, और वो कौन सी मतलब हमारे पास नावल है तो नावल को इतनी पॉपुलैरिटी थी तो वो क्यों थी. तो इस तरह की सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि हमें एकेडमिक पर्पस के लिए भी बड़ी बेनिफिशियल हैं. और उसके साथ साथ उनके रीजंस और फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हमें क्या है कि हम उन चीज़ों को अवॉइड ना करें जो कि हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस पैदा करती हैं. तो हमने उनको अवॉइड करना है, और हमने एक सही चीज़ चुननी है या सही रास्ता चुनना है for the betterment of ourselves, for the betterment of a society, for the betterment of a country, okay. So in this way we will study these all characteristics. In this way we will study all the topics which are given in course outline. So पहला ये जो था नॉवेल, इसको हमने
डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और लेकिन ये जो सम फेमस नॉवलिस्ट यहाँ में सिर्फ यहाँ तक ही कैरी ऑन कर पाया था, उसके आगे हम नहीं गए थे। तो यहाँ का ये जो सम फेमस नॉवलिस्ट हैं, ये आप यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। सम नेम्स आर गिवन इन दिस स्लाइड, सो मैं आपसे ये स्लाइड्स भी शेयर करूँगा, तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और हर नेम के सामने उनकी सम फेमस वर्क्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। सो आई थिंक दैट यू विल फाइंड देम यूजफुल। तो अब मैं इनको डिस्कस नहीं करने लगा हूँ, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्लाइड में मौजूद है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोएट्री एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। This is also one of the most significant and important characteristic of Victorian era, that what kind of poetry was over there, and what actually were the characteristics or the impacts of the poetry on people. तो उन लोगों के ऊपर पोइट्री के क्या इम्पैक्ट्स है, या पोइट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या किस तरह की इनकी पोइट्री थी। तो in this way we are going to discuss this point. The first is the poetry of Victorian era was mixture of romanticism and classicism. तो इसको मैं let me highlight it that you can understand it properly. Yeah, mixture of romanticism and classicism. Now here you should know that what was the poetry of classicism, and you also must know that what was the poetry of romanticism. If you remember in my previous lecture, in which I tried to explain you, tried to give you the background history of romanticism, that what kind of poetry was there in romanticism, and why that poetry was written in romanticism. Because the romanticism was totally influenced by classicism, and the characteristics, because romantic writers are the romantic movement actually is the revolt against the classicism. So when we compare the poetry of romanticism and classicism, then that would be very easier for us to understand the poetry of Victorian era. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि हिस्ट्री के किसी भी एज के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, या किसी भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसका ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ उसी की बाउंड्रीज के अंदर रहकर और उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, हम तो पोइट्री तो भाई विक्टोरियन एरा की बात कर रहे हैं, तो हमें रोमांटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सारी हिस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप विक्टोरियन पोइट्री को डिस्कस करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था रोमांटिसिज्म राइटर्स का। रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री थी उनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। इसी तरह से रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री थी वो इस तरह से क्यों थी, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिज्म। क्लासिज्म की सोशल पोइट्री थी और रोमांटिसिज्म की पर्सनल पोइट्री थी। तो जब आप इन दोनों की पोइट्री को कंपेयर करेंगे, देन दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ विक्टोरियन एरा। अब इनकी पोइट्री क्या थी, क्लास पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू द पोइट्री ऑफ क्लासिज्म, क्योंकि उसके बाद रोमांटिसिज्म आया था, और रोमांटिसिज्म की पोइट्री के बाद हमारा ये आया है पोइट्री इन विक्टोरियन एरा। So classicism, because in the poetry, the poets of the classicism used to take the themes of social development, the themes of industries, the themes of urbanization, the themes of city life. तो उनके जो थीम्स होते थे पोइट्री के अंदर, इस तरह के थीम्स होते थे। उनकी पोइट्री का जो मेजॉरिटी पोइट्री जो उनकी थी, उनका जो फोकस था वो सिटी लाइफ के ऊपर था। आर्टिफिशलिटी, जो आर्टिफिशियल थिंग्स है उनके ऊपर ज़्यादा था, जैसे कि मटेरियलिज्म। और उनकी पोइट्री में ये होता था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, और दे यूज टू राइट द पोइट्री दैट you have to work day and night in order to get success, in order to make your society a better place for living. So indeed it was a good thing, because they were trying to educate the society through their poetry. वो अपनी पोएट्री के थ्रू सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते थे, उनको मैसेज देना चाहते थे कि सोसाइटी को किस तरह से बेटर कर सकते हैं हम। और लेकिन ये सारी पोएट्री इन्हीं थीम्स के सराउंडिंग घूमती थी। तो जो रोमांटिक राइटर्स है 1798 में जो रोमांटिसिज्म का स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी पोइट्री का जो मेन थीम्स हैं वो तो सारे सिटी लाइफ के अराउंड घूमते हैं। आपकी जो पोइट्री है वो सिर्फ सोसाइटी को डिस्कस करती है। आपकी जो पोइट्री है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच को मतलब डिस्कस करती है। तो आपकी पोइट्री में तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जो कि इंसान की पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इमेजिनेशंस, इसके लिए भी तो आपका तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं पोइट्री के अंदर। तो सो इन दिस वे romantic writers revolt against classicism.
इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया क्लासिज्म के कि आपकी ये जो पोएट्री है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। इट इज़ ट्रू कि सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, सोसाइटी की बेटरमेंट में भी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप इंसान की जो फीलिंग्स इमोशंस और उनको आप बिल्कुल भी भूल जाओ, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दो। इवन वो सारी प्रायोरिटी सिर्फ सिटी लाइफ को दे रहे हैं। तो दे द राइटर्स ऑफ रोमांटिक एरा दे सेड दैट योर पोएट्री शुड बी और मस्ट बी फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड एरियाज एज वेल। वो जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनकी भी इमोशंस हैं, उनके भी फीलिंग्स हैं, वो भी इंसान हैं, उनके लिए भी होनी चाहिए पोइट्री। क्या पोइट्री पे सिर्फ उन लोगों का हक है जो शहरों में रहते हैं? क्या पोइट्री के ऊपर उनका कोई हक नहीं है जो कि रूरल लाइफ में ज़िंदगी गुजारते हैं? सो इन दिस वे दे रिवोल्ट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ क्लासिज्म एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो पोइट्री की, अब इनकी जो क्लासिज्म की पोइट्री थी पर्सनल नहीं होती थी, इसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस कुछ भी नहीं होते थे, इंसान की पर्सनल डिज़ायर्स नहीं होती थी, सिर्फ सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट इस टाइप की होती थी। लेकिन रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री थी दैट पोइट्री वाज प्योरली बेस्ड ऑन द फीलिंग्स एंड द इमोशंस ऑफ द पीपल, स्पेशली द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन कंट्री साइड एरियाज। अब इनकी जो सेटिंग होती थी क्लासिज्म वालों की, वो सिटी लाइफ की सेटिंग होती थी। लेकिन रोमांटिसिज्म की पोइट्री की जो सेटिंग होती थी, सॉरी अगर मैंने पहले सिटिंग बोला, आई डोंट नो, सेटिंग। तो ये जो रोमांटिसिज्म की जो सेटिंग होती थी वो प्योरली रूरल एरियाज के ऊपर बेस्ड होता था और नेचुरल मींस नेचुरल ब्यूटी को ज़्यादा डिस्कस किया जाता था रोमांटिसिज्म के अंदर। जबकि क्लासिज्म के अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें, इसके अंदर रोमांटिसिज्म के अंदर नेचुरल चीज़ें ज़्यादा। जैसे कि आपको एक में पहले भी शायद मैंने एग्जांपल दी हो, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को आप देखते हैं तो वो डेफोडल्स आपको 7-8 जमात में जो आपने पढ़ा है, तो ही इज़ टॉकिंग टू द नेचर, वो नेचर से बात कर रहा है। तो इसकी रोमांटिसिज्म के जितने भी पोइट्स हैं वो नेचर के वो बड़े मीन्स फ़ैन हैं, आप यूँ समझ लें कि वो नेचर जो भी है वो कहते हैं कि जो भी ब्यूटी है वो नेचर में ही है, आर्टिफिशियल चीज़ों में कोई ब्यूटी नहीं है। तो इसीलिए ये आम लोगों के लिए होती थी, रूरल साइड जो लोग होते थे उनके लिए होती थी, और ये सिर्फ सिटी लाइफ के लिए होती थी और स्पेशल लोगों के लिए होती थी, स्पेशली फॉर द पीपल हु वर वर्किंग एंड लिविंग इन सिटीज एंड द पीपल हु वर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। तो इन दिस वे you have to compare the poetry of romanticism and the poetry of classicism. जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे then it would be very easy for you to understand the poetry of Victorian era. अब आप इस पॉइंट को दोबारा पढ़ें, the poetry of Victorian era was mixture of romanticism and classicism. अब देखें आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि देखो ये जो विक्टोरियन पोइट्री थी वो मिक्सचर था, विच मीन्स के इन द पोइट्री ऑफ विक्टोरियन वाज बेस्ड ऑन uh, the setting of the poetry of Victorian era was like it has the setting of natural beauty. It has the setting of rural areas. It has the artificial setting as well. It has the setting for city life as well, which means कि वो सारे characteristics जो इन दोनों में हैं इन्होंने मिलाकर यहाँ पर उनको कर दिया और दोनों को लिया। जो अच्छी चीज़ें थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी क्लासिज्म की, वो इन्होंने ली विक्टोरियन ने, उनके ऊपर वो अपने ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको कॉपी पेस्ट किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉपी पेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच मीन्स के वो चीज़ें जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अच्छी हैं, सोसाइटी को हम अच्छा कर सकते हैं, उनके उन टॉपिक्स के ऊपर या उसी से रिलेटेड विक्टोरियन राइटर्स ने अपनी पोइट्री को लिखा। वो चीज़ें जो कि उन्होंने समझा कि उनके सिवा नेचर इनकम्प्लीट है या पोइट्री इनकम्प्लीट है, आम लोगों के लिए होनी चाहिए, सिटी सॉरी रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इन्होंने आल्सो रूरल एरियाज़ के लिए भी इन्होंने पोइट्री लिखी, नेचर के ऊपर भी लिखी और फैक्ट्रीज के ऊपर भी लिखी, सिटी लाइफ के ऊपर लिखी। तो इन दिस वे द पोइट्री ऑफ रोमांटिक है, द पोइट्री ऑफ विक्टोरियन एरा वाज द मिक्सचर ऑफ रोमांटिसिज्म एंड क्लासिज्म। आई होप दैट इस पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है और इसमें आपको क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म की पोइट्री को भी मैंने एक्सप्लेन टच कर दिया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट। इट वाज पावरफुल वॉइस फॉर क्रिटिसिज्म। अब यहाँ से लेट मी हाईलाइट पावरफुल वॉइस। नाउ व्हाट इज पावरफुल वॉइस फॉर क्रिटिसिज्म, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, now, the poetry of Victorian era was powerful voice for criticism because the poets of this era used to criticize on the elite class. They used to criticize on the people who were ruling them. They were used to criticize on different
uh, wrongdoings in the society. They used to criticize on such kind of things through their poetry, such as the person is living in one area. How would he come to know that what is being happening in another area? And how? Because एक बंदा एक जगह पे रह रहा है, लाइक आई एम लिविंग इन लयारी, सो मुझे तो एग्जैक्टली उस टाइम, अभी तो मीडिया के थ्रू पता लगता है, लेकिन उस टाइम पे मीडिया नहीं था, तो और अब दूसरे इलाकों में मतलब जो वहाँ के इश्यूज होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, अगर सम हाउ घूम घूम कर हमें पता लगते हैं, तो ऑन दैट इश्यूज आर द प्रॉब्लम्स, वो इशू जो कि कुछ ने हदीद में हो रहा है वो मुझे पता लगा है, सच है। तो उस टाइम के ज़माने में अगर एक दूसरे से जो दूर होते थे, तो इन दिस वे दे यूज टू क्रिटिसाइज ऑन दोज इश्यूज। वहाँ अब मीडिया तो नहीं था कि वो मीडिया के ऊपर जाके क्रिटिसिज्म करे, तो वो द पोइट्री वाज पावरफुल वॉइस फॉर द क्रिटिसिज्म। उसकी सोसाइटी, वहाँ के लोगों के ऊपर अगर कोई कोई गलत काम करता था, तो उसके थ्रू भी ये क्रिटिसिज्म करते थे। वो जो उनके, अब मैं मिसाल दूंगा कि किस तरह के इश्यूज, सच है चाइल्ड लेबर, जो कि इसमें एक मेजर करेक्टरिस्टिक भी है आई थिंक, और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल रहा है चाइल्ड लेबर का इस विक्टोरियन एरा के अंदर। तो जो चाइल्ड लेबर का जो इशू था, इसके ऊपर राइटर्स क्रिटिसिज्म करते थे उनके ऊपर। अगर किसी को अपने हक नहीं मिल रहे हैं, अपने हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म करते थे थ्रू द पोइट्री। तो इन दिस वे द पोइट्री ऑफ विक्टोरियन एरा वाज अ पावरफुल वॉइस फॉर द क्रिटिसिज्म। अच्छा, ये है मैनली हॉपकिन, ये एक राइटर का नेम है। थर्ड पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, तो लेट मी हाईलाइट। पोइट्री वाज अबाउट लव फॉर द नेचर एंड हीरोज लाइक डिवॉल्व। अब ये जो हॉपकिंस है, इसकी जो पोइट्री होती है, हिज पोइट्री वाज टोटली बेस्ड ऑन द नेचर। लेट मी हाईलाइट, हिज पोइट्री वाज बेस्ड ऑन नेचर एंड द हीरोज लाइक डिवॉल्व। अब because whenever we go through from the poetry of Hopkins, majority of his poems were written on the nature, love for nature, and uh, nature and the beowulf, the heroes, the previous, the ancient heroes, the heroes which they get from the histories, are even we can say that he might have wrote also about the heroes of his time as well. So in this way he used to write about nature and the हीरोज। सो अब ये जो था, अब बिवोल्फ के इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि नेचर, पहले तो नेचर के ऊपर बात करते हैं कि इसकी जो पोइट्री बेस्ड होती थी वो नेचर के ऊपर होती थी, और ये कहता था कि जैसे कि नेचुरल ब्यूटी जो भी है वो आपको सिटी लाइफ में नहीं मिलेगी, वो आपको कंट्री साइड एरियाज में मिलेंगी, वो आप जब सिटी लाइफ से बाहर निकलेंगे तो ही आपको नेचर मिलेगी, आपको नेचर सिटीज़ के अंदर नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इसकी जो पोइट्री की जो सेटिंग्स होती थी वो नेचर की बेस्ट पे होती थी। और बिवॉल्व विच मीन्स के ये हीरोज़, एंशेंट हीरोज़ के ऊपर अपनी पोइट्री करता था और उनको अपनी पोइट्री में डिस्कस करता था। अब अगले पॉइंट में है, मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ दिस एरा वाज सर एल्फ्रेड। अब ये जो सर एल्फ्रेड हैं, ये विक्टोरियन एरा का सबसे सिग्निफिकेंट पोइट है, और ही हैड द लीडरशिप ऑफ पोइट्री फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसका मकसद ये है कि ये जो सर एल्फ्रेड है, ये 40 साल तक ये जो पोइट्री है विक्टोरियन एरा की, यानी जो विक्टोरियन एरा के जितने भी पोइट्स थे, यू मे से दैट ही वाज द लीडर ऑफ ऑल पोइट्स इन विक्टोरियन एरा फॉर 40 years, and he is the most significant and prominent poet of this era. So, if someone would ask you that who was the most significant poet of Victorian era, then without wasting your time, you may say that it was Sir Alfred. Now, poetry of this era was social and personal as well. So here is the point which I think, discussed already, but let me give you another example related to this, that it would become easier for you. Now, the poetry of this era was social and personal, because uh, social is the poetry which deals the issues related to the society. And in the social poetry, you will find the settings like uh, there are the issues in the society and how one should solve that issues, how one should get rid of those issues, and how the government should do, and what is the morality and what should be the moral values of a man. So such kind of things you will find in the social poetry. But when we talk about the personal feelings, then it is the carrier of personal feelings and emotions. Whenever
there is the overflow of feelings and emotions. So that is handled with the poetry. And someone is very sad due to some specific reasons. When he go through a when the person goes through from such kind of personal poetry, then he gets pleasure from that, and he tries to he that person try to satisfy himself as much as he can through that poetry. So that poetry, the poetry of Victorian era was social and it was personal. I hope कि आपको ये point यहाँ तक समझ में आया होगा. If you did not understand anything related to the poetry and this characteristics, then you may ask me in the groups as well. I will try my best to answer you. And if you have any question related to academic course outline or any topic which I have taught you, then you may ask me through the personal message as well. The third is drama. What is drama? In this era, the drama was also most important source of entertainment. So here we come to know that drama is the source of entertainment as well. So let me highlight it. So, which means the entertainment was also being done through the drama as well, and the people used to organize such kind of events in order to entertain themselves, and the dramas used to be performed over there. So now, in another point, comic opera. Okay, comic opera were introduced in this era. Now, operas are the dramas, are the serials which have different kind of stories, and you will find the uh, uh, funny funny story in the comic operas, and we call them operas because they are family related dramas, and comic in a sense that they are funny. I think अजान आ रही है, तो मैं 2 मिनट के लिए म्यूट हो जाता हूँ, खुद को म्यूट कर लेता हूँ. आफ्टर द अजान आई विल स्टार्ट अगेन. ओके. आई थिंक अजान इज completed. So I was talking about comic operas. So when we talk about the comic operas, then you have to keep one thing in your mind, which is that comic means in comic operas there were the stories in which in which there were the funny stories, and there were family related dramas or the family related stories. So that's why they were firstly introduced in this era in Victorian age. Okay, so you have to keep this in your mind. And now, first famous series of comic operas was done by Gilbert. Okay, let me highlight it. This Gilbert is the name of the author who used to write the comic operas, and along with that, he was his another partner. So their first famous series, it was comic operas, was the first famous series in Victorian era, and more importantly, the first type of plays which achieved 500 performance. अब ये जो कॉमिक ओपेरा है, ये जो गिलबर्ट और इसके सिविलियन ने लिखा था, उनको जो परफॉर्म होते थे, तो ये फर्स्ट ऐसा ड्रामा था जिसको 500 टाइम्स परफॉर्म किया था, वो भी कंटिन्यूसली. विच मीन ऐसा नहीं है कि वो 500 टाइम वो बस एक मतलब ख़त्म हो रहा है नहीं. विच मीन्स के अन मुख्तलिफ डेज एंड द इवेंट्स वो उसको परफॉर्म करते रहे थे, और वो 500 बार परफॉर्म हुआ है. इट मेड द हिस्ट्री.
ऑफ दैट टाइम। ये पहला ड्रामा था जो इतनी बार परफॉर्म हुआ था। सो बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस टाइम वाज ऑस्कर वाइल्ड। नाउ ऑस्कर वाइल्ड इज द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम। ओके, सो let me highlight it. And his masterpiece was Importance of Being Earnest. His most significant work are the drama. Here it is. आई होप कि आपको ड्रामा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड which is the fourth characteristic, which is the progress of science। 2 मिनट के लिए रुकते हैं, ये आसान हो जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउ ये जो हमारी फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है प्रोग्रेस ऑफ साइंस। नाउ we'll discuss it in detail that what actually was the progress in science. Before industrial revolution, whole Europe was agricultural. Now, if we talk about this point, then we would come to know that if we trace the history, then we would come to know that actually the whole Europe was agricultural society. It was not the industrial society, but when the industrial revolution came, then the Europe became the industrial society. So, in agricultural society, most of the people used to live in countryside areas of the time, and और उनका जो and their source of income was like on एग्रीकल्चर ओनली। सिर्फ एग्रीकल्चर ही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन आई एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म होने लगा यूरोप इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। तो इसी तरह से लोगों ने जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते थे, बिकॉज आपको पता है एग्रीकल्चर इज ऑलवेज फाउंड इन रूरल एरियाज नॉट इन सिटीज। तो वो जो रूरल एरियाज़ के अंदर उनके एग्रीकल्चर्स वगैरह होते थे, तो वहाँ से लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू द सिटीज़। इन दिस वे दे केम इन द सिटीज़ एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। और इसी तरह से ये जो विक्टोरियन सोसाइटी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये जो प्रोग्रेस ऑफ साइंस था। अच्छा,
अब ये कैसे हुआ, इंडस्ट्रीज क्यों आई, बिकॉज इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली साइंस की वजह से आई। जो डेवलपमेंट हुई साइंस के अंदर, उसी के थ्रू ही इंडस्ट्रीज आई और फैक्ट्रीज डेवलप हुई, और इसी के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल हुआ साइंस की वजह से। क्योंकि साइंस में प्रोग्रेस आया तो ये सारी चीज़ें हो गई और ये पूरी सोसाइटी ही चेंज हो गई। सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप्ड हो गई। Before there was a much concept of before there was not much concept of science। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ से अब इससे ज़्यादा, इससे इन एरा से पहले साइंस इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस साइंस का नहीं था, बट this was the era in which there was a huge progress in the science, in the sector of science। और क्योंकि हम ओल्ड टाइम्स में चले जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। इन विक्टोरियन एरा a lot of development can be seen in sector of science and technology। इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। So many inventions took place for the betterment of human beings। अब इससे ये मुराद है कि so many inventions, अब बहुत सारी इन्वेंशन आ गई, ठीक है, इसी अंदर। अब देखें एंशिएंट टाइम्स में हम चले जाते हैं कि एक कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट में, इन ओल्ड टाइम्स देयर वाज नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ना वहाँ पर कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ओल्ड टाइम्स में, ना ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। तो अगर किसी से बात करनी होती थी तो दे यूज टू ट्रैवल फॉर मंथ्स। अगर कोई मैसेज देना होता था तो दे यूज टू ट्रैवल फॉर मंथ्स इन ऑर्डर टू गिव दैट मैसेज टू द पर्सन। एंड बट ये जो विक्टोरियन एरा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी इन्वेंशंस आई और साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अगर देखा गया है तो वो इस एरा के अंदर देखा गया है। अगर हम एग्जांपल देना चाहूँगा साइंस से कि कौन सी वो एग्जांपल है जो आपको बताऊं कि कौन सा प्रोग्रेस साइंस में, जैसे कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आपने जो पढ़ी है, दी इवोल्यूशन थ्योरी। तो वो जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो इसी एरा के अंदर आई है और चार्ल्स डार्विन का ताल्लुक इसी एरा से है। उसने जो इवोल्यूशन थ्योरी दी, साइंस की बेसिस पे उन्होंने दी कि इंसान की जो इवैल्यूएशन हुई है वो कैसे हुई है। वो आप लोगों ने आपके बायोलॉजी के बुक में पढ़ा होगा कि चार्ल्स डार्विन ने किस तरह से अपनी थ्योरी दी है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट थी साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखी गई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी वो चीज़ें आ गई जो कि इंसान की ज़िंदगी को कन्वीनियंट बना रही थी। तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इंडस्ट्रीज़ आ गई, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, तो इस तरह से हुआ। नाउ आगे है द रोल ऑफ वुमेन। अब जो ये भी एक मेजर करेक्टरिस्टिक है कि विक्टोरियन एरा के अंदर व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल क्या था। बिफोर दिस एरा वुमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क, not allowed to work, let me highlight it। Before this era the women were not allowed to work, they were not even allowed to write anything, they were not allowed to write or to get education। Let me highlight these all the key terms। Neither they were allowed to get education except elite class, because the women of elite class were allowed to get admission like the princes and the daughters of the lords or the daughters of the landlords. They used to get education. They were allowed to write, they were allowed to do some work, but apart from that, when we are talking about the masses, the common people, laymen, uh, the women of laymen were not allowed to get education। They were allowed to write in a sense के उनको ये अलाउ नहीं होता था कि वो आए और अपने किताब लिखें और उनको पब्लिश कराएं। इफ समहाउ अलाउ इसलिए नहीं था, वो उनके ऊपर डंडा लेकर नहीं बैठ जाता था कि अगर आपने बुक लिखा तो हम आपको मार देंगे। नो, थिंग्स वर नॉट लाइक दैट वे। थिंग्स इस तरह से थी कि इफ एनी वुमन is writing a book or has written or completed her book, then she used to get it published। But when her book is published, nobody would read her book because she is a woman। क्योंकि वो वुमेन है तो इसीलिए उसकी किताब को कोई नहीं पढ़ेगा।
due to which means ke they were not allowed to write. So in the same way, the women were not allowed to work as well. Even I'm talking about the early Victorian era. Okay, तो उसमें means women को allow ही नहीं था कि वो कोई काम करें. तो they used to be treated even sorry, not early, but I'm talking about before Victorian era. Even before Victorian era, the women used to be treated like the princesses of the home, and they used to ask them that you have to sit at home, you have to take care of home, children, make meal for the husband, make meal for the children, फला फला फला. तो इस तरह से इनको ये बोलते थे कि आपका रोल यही है सोसाइटी के अंदर, आपने यही काम करना है. You are born to do these kind of things. You are not born to work along with men. इसलिए उनको अलाउ नहीं था उस बिफोर. बट ये जैसे विक्टोरियन एरा आया, तो विक्टोरियन एरा में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देयर वाज द इंडस्ट्रीज, देयर वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर वर द फैक्ट्रीज, देयर वाज द अर्बनाइजेशन, द पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम कंट्री साइड एरियाज टू द सिटीज. So in this way, the women also start working in factories. They were allowed to work. The women also got independence to write. They also got permission to get education, but not. I'm talking about on some scale. On some scale, they got the permission, they got some rights, but not 100%. वो 100% नहीं है कि उनको सबने अलाउ कर दिया पूरी सोसाइटी के, हाँ सब आप जाओ जाके काम करो. नो, means the mentality of the people of Victorian era start changing. उनकी जो mentality थी वो change होना शुरू हो गई. So this change took place in the era of Victorian, where the people start giving permission to their women to go out, and you may work in the factories, you may work along with uh, males, and they were also allowed to write, and they were also allowed to get education like the boys were getting education. So in this way, they, on some scale, on some extent, they were given some permission, and we have and the change in mentality was seen over there. So now let's move forward to another point, which is women used to be treated as mistreats of home, which I have already, I think, discussed. They used to ask the women that you are the mistresses of home and homes, and you are not supposed to go out and work. It is the duty of husband to go, husband, brother, or father to go out to work to earn bread and butter for you, but you have just one duty to fulfill, which is you have to make meal for children, you have to take care of home, you have to take care of children. And means they were, apart from that, the women were also allowed to educate their children at home. Even those women would educate those children, because जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, उनको एजुकेशन अलाउ नहीं थी, लेकिन ऑन समहाउ, अगर समहाउ किसी के पास पढ़ना लिखना कुछ को किसी ने सीख लिया है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से या कहीं से भी, सो दे यूज्ड टू बी आस्क्ड टू गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एज वेल. तो इसी तरह से वहाँ पर उनकी सोसाइटी थी. Still they were under influence, though at least somehow they got little freedom. अब विक्टोरियन एरा के अंदर they got little freedom. Let me highlight it. अब विक्टोरियन एरा के अंदर इनको थोड़ी सी समहाउ थोड़ी फ्रीडम इनको मिल गई एजुकेशन के लिए, राइटिंग के लिए, काम करने के लिए, बट स्टिल दे वर अंडर इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी. वहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो so they were still you know, under the influence of such kind of people, but their mentality start changing. तो अब यहाँ पर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अभी तक उनका इन्फ्लुएंस था जॉर्ज एलियट का. द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ जॉर्ज एलियट. अब जॉर्ज एलियट का, एज यू ऑल नो, कि इसका नेम मेरी एन है और इनका पेन नेम जॉर्ज एलियट है. अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इसने अपना रियल नेम क्यों नहीं यूज़ किया. अगर मैं कोई अपनी चीज़ लिखूँगा, सच है कि मैं रिसर्च आर्टिकल कोई अगर लिखता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ, तो उसको तो मैं अपने नाम से लिखूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये मैंने लिखा है, तो इसकी जो मीन्स बेनिफिट्स हैं या जो भी इसका रेस्पेक्ट है, पॉपुलैरिटी है, जो कुछ भी है, वो मुझे मिलना चाहिए. मैं क्यों दूसरे किसी का नेम यूज़ करूँ. तो बट
क्यों जॉर्ज इलियट पेन नेम यूज किया मैरी एन ने? बिकॉज द सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन एरा वाज स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ such kind of people who had the male dominancy in their minds, and they were not accepting the written work of females. They were not giving permission to the women that they can get education. They were also not giving permission to the women that they can go out to work along with men. So due to that reason there was still influence, उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बिल्कुल था, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो मैरी एन ने अपना पेन नेम यूज किया जॉर्ज इलियट। शी न्यू दैट इफ आई विल वर्क, I will write with my real name, or in the publication, if my real name would be published, then nobody is going to read my work. मेरे काम को कोई भी नहीं पढ़ेगा, चाहे वो कितना भी ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना भी एक्सीलेंट पीस ऑफ लिटरेचर क्यों नहीं हो, nobody would read that. इवन तो इसीलिए उन्होंने जो नेम चूज किया अपने लिए वो जॉर्ज इलियट का पेन नेम यूज किया, ताकि रीडर्स को पता नहीं चले कि ये किसी फीमेल राइटर का है। सो बट लेटर वो उन्होंने बाद में उसको रिवील कर दिया था कि ये जॉर्ज इलियट के साथ जब उनको पॉपुलैरिटी मिल गई बहुत ज़्यादा, तो शी रिवील्ड दैट जॉर्ज इलियट इज़ एक्चुअली शी, और उनके जो पब्लिशर्स थे दे आल्सो रिवील्ड द सीक्रेट। Many female writers start writing in this era like Bronte sisters. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनको कुछ फ्रीडम मिली थी लिखने के लिए, एजुकेशन की और काम करने की। तो आप देखें, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, विक्टोरियन एरा से पहले के ज़माने को देखते हैं, तो यू विल हार्डली फाइंड फ्यू नेम्स, बहुत मुश्किल से आपको फ्यू नेम्स मिलेंगे, नेम्स, फीमेल नेम्स, who wrote for the history, who wrote novels or the poems or such kind of stuff. You will hardly find few names. But Victorian era ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारे नेम मिलेंगे, and after the Victorian you will find so many names in the literature. But before Victorian era, it is very hard to find few names of females in the history. So Bronte sisters also start writing in this era because the written work of the females were also being accepted in the society, so that's why they start writing. If we trace the history, we will, yeah, I have, I think, discussed before this era women were not allowed to write, that's why there might be one or few names before this era. Okay, आई होप कि आपको जो वुमेन का जो रोल था वो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर विक्टोरियन एरा, एंड व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कम, हाउ the things got changed and how the mentality of people start changing, and how the women were given some kind of permission to get education, to write and to work, but that permission was limited. And in this way, this was the role of women in the era of Victorian. इससे हमें ये पता चलता है, जब हम इस करेक्टर, ये जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जितने भी हैं, जिसको भी हम पढ़ते हैं, तो देखें हर करेक्टरिस्टिक का एक अपना एंगल है, वो अपनी तरीके से चीज़ों का रिफ्लेक्शन दे रहा है, या विक्टोरियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। अब हमने ये जो रोल ऑफ वुमेन पढ़ा है, इसमें जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है विक्टोरियन सोसाइटी का। आप थोड़ा इमेजिनेशन में जाएंगे तो आपको पता, आप बिल्कुल इमेजिन करेंगे कि किस तरह की विक्टोरियन सोसाइटी थी। लेकिन अगर हम ये ना पढ़ते, विक्टोरियन एरा में ये चीज़ें डिस्कस ना होती, तो हमें कैसे पता चलता? हमें नहीं पता चलना था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ era and with the help of characteristics of the era, we come to know about the Victorian society in more details. Now let's move forward to another slide, which is religion versus science, the most important point as well. If we trace the history, we will come to know that in old times a lot of priority used to be given to the religion. There's no doubt that in ancient times, in dark ages, in old times, a lot of priority used to be given to the religion. Even the religion was the absolute power. They had the authority, and no one would dare to talk about religion, to dare to talk against religion. Uh, each and every person in the society had to respect the religion, had to respect the people who are religious. Which means religion was the absolute power over there. Now, in next point, I have church was the absolute power. But when we talk about, I'm still talking about first point, okay?
So before I told you that the what was the power of religion, but in Victorian era there was the conflict between religion and the science. The people start asking questions from the religious scholars. They asking questions about the religion. They start asking different kind of things about the myths which were being heard from generations to generations. वो चीज़ें जो कि वो अपने religion से मुताबिक जो आबाओ अजदाद से सुनते आ रहे थे, कि वो myths जो सुनते आ रहे थे उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए. लेकिन before nobody was allowed to ask the question from the religious authorities. But यहाँ पर विक्टोरियन एज के अंदर यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया, एंड दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स. उन्होंने लॉजिक्स एंड रीजंस की बेसिस पे सवाल पूछना शुरू कर दिए, और जो चीज़ें उनको लॉजिक और रीजन से रिलेटेड जो उनको सही लगती थी, दे यूज टू कंसीडर दोज थिंग्स ट्रू. इवन वो जो मिथ्स जो उनके रिलीजन में होती थी वो लॉजिक और रीजंस के ऊपर नहीं उतरती थी, तो दे यूज टू कॉल देम एज अनट्रू थिंग्स आर दी लाई, स्वीट लाइज. तो इस तरह से उनको वो पुकारते थे. एंड वो इन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए. तो दिस वाज प्रैक्टिस ऑफ विक्टोरियन एरा. पर उससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी. Nobody was allowed to ask the question. Even the queens and kings were not allowed to ask questions from the church. एजुकेट तो अब वो क्यों नहीं होते थे? अब क्वींस और किंग की बात आई है तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. शायद वो मैंने नीचे कहीं पे कोट किया हुआ होगा तो वो रिपीट भी हो जाएगा. तो वो एग्जांपल ये है कि उस टाइम में विक्टोरियन एरा से पहले जो किंग्स होते थे या क्वींस होते थे, दे वर आल्सो नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम चर्च. They were not allowed to ask questions from religious authorities. Whatever rules and regulations used to be made by religious authorities, they used to be considered as law. वो उनके लिए law बन जाता था. And uh, all the people would have to follow those all the rules and regulations, including the queens and kings. सबको उनको फॉलो करना पड़ जाता था. आपकी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा गेम ऑफ थ्रोन्स से. तो अगर आप लोगों में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें एक चीज़ आपको याद होगी कि जो क्वीन थी, क्वीन, आई डोंट रिमेम्बर नेम ऑफ दैट क्वीन एग्जैक्टली. उसका नेम अभी मेरे जहन से निकल गया है. लेकिन वो जब क्वीन अपने पावर में थी, उसका जो बेटे थे दो, दे वर मर्डर्ड. वो दोनों मर गए थे. एंड जॉफ्री एंड अदर, जॉफ्री के मरने के बाद उसका जो छोटा भाई है, ही केम इन पावर. तो यू सी द टेन्योर ऑफ उसका जो छोटा भाई था, उसका जो टेन्योर आप देखें एज अ किंग, कि ही वॉज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज. वो टोटली इन्फ्लुएंस था रिलीजियस अथॉरिटीज. रिलीजियस लोग जो उसके साथ था, वो जो उस तरह जो उसको बोलता था वो वैसा करता था. इवन जो क्वीन थी, क्वीन के पास भी इतना पावर नहीं था कि वो उनको रोक सके, रिलीजियस अथॉरिटीज को रोक सके. शी वांटेड टू स्टॉप देम बट शी वाज अनएबल टू डू सो. उसके बाद जब उस लड़के ने खुदकुशी कर ली, बिकॉज उसने क्यों खुदकुशी कर ली? बिकॉज शी दैट बॉय एंड हर मदर, sorry, his mother were totally influenced by religious authorities. Whole the city was influenced by religious authorities. अगर कोई भी रिलीजन के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो क्वीन क्यों ना हो. इफ़ यू रिमेंबर उस क्वीन को क्या सज़ा मिली थी और क्यों मिली थी और उसको किसने सज़ा दी थी. उस क्वीन को जो सज़ा हुई थी, पूरे शहर में उसको जो घुमाया गया था, only because of she broke the code of conduct or religion of that time. तो religion was very powerful in old times. तो अब बाद में उसने जो उनको सारे रिलीजियस वालों को एक जगह पर बुलाकर एक मीटिंग बनाई थी, लेकिन वहाँ पर ये खुद नहीं गई. वहाँ पर एक प्लान था, उन सबको वहीं पे मार डाला इन ऑर्डर टू गेट रिवेंज एंड टू गेट द एब्सोल्यूट पावर. वो जो एब्सोल्यूट पावर इसके पास नहीं था, वो रिलीजियस अथॉरिटीज़ के पास था. उसको गेन करने के लिए उनको सबको मार दिया. तो आप लोगों में से जिसने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो ऑब्वियसली तो उसको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने क्या एग्जांपल दिया. और 100.10% फिक्ट एग्जांपल है इसके ऊपर कि रिलीजन कितना स्ट्रांग होता था, कितना पावरफुल होता था पुराने टाइम में. लेकिन ये जो विक्टोरियन एरा है तो इसमें रिलीजन वाज नॉट एज पावरफुल एज बिफोर.
The church, the people, educated people accuse the church of taking sides with the elite. जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। पहले तो ऊपर पॉइंट में मैंने बताया कि किस किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे। यहाँ पर उन्होंने ये भी इनको इल्ज़ाम लगाया चर्च के ऊपर कि भाई आप, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च दैट डजंट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वर influential, the people who had the power, they were the ruling over the church। वो लोग जो रूलिंग थे, रूलिंग क्लास था वहां पर, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन स्पेसिफिकली, मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, मुझे किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। बट आई एम जस्ट कोटिंग द हिस्ट्री कि वहाँ की प्रैक्टिसेस क्या थी, इससे पहले की क्या थी और बाद में क्या थी। तो अब वो जो चर्च के पास अब्सोल्यूट पावर होता था, पहले तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि चर्च के पास अब्सोल्यूट पावर किस तरह से होता था। ऑल द फॉर्मल एजुकेशन यूज्ड टू बी गिवन बाय चर्च। चर्च जो, अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो एजुकेशन थी, स्कूल्स नहीं होते थे, एजुकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चर्च से आया है। चर्च के अंदर जो अथॉरिटीज होती थी वो क्या करती थी कि वहाँ पर जो स्कॉलर्स होते थे, उनके जो चर्च की जो अथॉरिटीज, उनको उर्दू में तो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, वो पढ़े लिखे होते थे। दे वर द एजुकेटेड पीपल ऑफ दैट टाइम एंड दे यूज टू गिव एजुकेशन टू द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द इलीट क्लास। जो इलीट क्लास के बच्चे होते थे उनको चर्च के अंदर एजुकेशन दी जाती थी, क्योंकि इनको पता था कि जो एलीट क्लास के हैं तो उन्हीं को ही कंट्री को रूल करना है, सो दे मस्ट नो हाउ टू रीड एंड राइट। इन दिस वे दे यूज टू बी गिवन एजुकेशन। उनको एजुकेशन दी जाती थी अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और उनको एजुकेट किया जाता था ताकि वो इंटेलिजेंट बने और वो अपनी स्टेट को अच्छे से चला सकें। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद उसको और इनलार्ज किया गया, और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको भी चर्च के अंदर एजुकेशन देना शुरू हो गए, और वहाँ के जो कोड ऑफ कंडक्ट होता था वो भी चर्च से आता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सोसाइटी वो भी वहाँ से आते थे। तो मीन चर्च वॉज द एब्सोल्यूट पावर, वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर होता था। लेकिन यहाँ पर जो विक्टोरियन एरा के अंदर जो एजुकेटेड क्लास था, उन्होंने चर्च के ऊपर मीन्स चर्च की अथॉरिटीज जो थी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप सिर्फ एलीट क्लास के लोगों की साइड लेते हैं। जो भी काम होता है, जो भी आप रूल बनाते हो, वो वन वे अदर, वो दैट रूल इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु बिलोंग टू एलीट क्लास। सो आप उन्हीं की फेवर करते हैं। तो इस तरह के एक्यूजेस आना शुरू हो गए। Nobody would question about faith or religion, even nobody could ask any question from the authorities of church. This is true कि हिस्ट्री में ये है कि कोई भी, जैसे कि आज बेस्ट एग्जांपल इज दैट, आज अगर हम वी आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट। अगर मैं किसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, स्कॉलर्स जो हैं, दे आर लाइक द ओशंस ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज है। बट हमारे जो गलियों के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आल मुल्लास, उनमें से कुछ ऐसे मौलवी हजरात हैं जिनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। तो आप उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे फैथ के ऊपर, तो वो आपको फौरी लेबल लगा देंगे कि भाई आप तो काफिर हो गए हो। आप मीन्स आपको फौरी फौरी 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इस्लाम से बाहर कर देंगे। सो दिस इज द सोसाइटी ऑफ टुडे। तो हमारी ये सोसाइटी है। तो पहले भी यही सेम कॉन्सेप्ट था कि भाई कोई भी रिलीजन के ऊपर सवाल, फैथ के ऊपर सवाल करना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। Nobody was allowed to ask the question about faith or the church or about the authorities of the church, about the decisions, उनके decisions के ऊपर भी कोई सवाल नहीं कर सकता। so so which means कि they was very powerful here in this era. Due to the technology and science, the mindset of the people got changed. अब विक्टोरियन एरा के अंदर, here in this era means विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के अंदर पीपल का, लोगों का जो क्या था, जो कॉन्सेप्ट था, जो माइंडसेट था, वो चेंज होना शुरू हो गया। वो ट्रेडिशनल ज़माने से निकल के आना चाह रहे थे और पुरानी चीज़ों को अवॉइड करके, और देन दे यूज टू एनालाइज द थिंग्स थ्रू द विद द ऑब्स्टिकल्स ऑफ साइंस एंड लॉजिक्स एंड द रीजंस। इनके थ्रू वो चीज़ों को एनालाइज करना चाहते थे, देखना चाहते थे। अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी टू साइंस,
अब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने साइंस को देना शुरू कर दी, रीजंस को देना शुरू कर दी, और लॉजिक्स, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इन चीज़ों को यहाँ पर देना शुरू हो गई। लेकिन पहले क्या होता था, जो भी स्टोरी बताई जाती थी वो सारे लोग आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेते थे, जैसे हम करते हैं अभी भी। लेकिन उस टाइम पे वो पहले ऐसे करते थे, सारी चीज़ें जो भी बताई बात उनको बताई जाती थी तो वो आंखें बंद करके यकीन कर देते थे। लेकिन विक्टोरियन एरा के अंदर जो भी इनको बात बताई जाती थी तो उसको वो साइंस के पर्सपेक्टिव्स में लाजमी देखते थे। अब ये जो रीजंस एंड लॉजिक्स हैं, दे आर टोटली इंटरकनेक्टेड विद साइंस। तो उस चीज़ के रीजंस देखते थे, पॉसिबिलिटीज देखते थे, फैक्टर्स देखते थे कि वेदर दिस कैन हैपन और नॉट। अगर कोई बोले कि मैं आसमान पे परी उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वो एक चांद को लेकर नीचे आ गई, तो मीन दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट द रियलिटी। सो वेन एवर अ पर्सन hears such kind of things or such kind of stories, then the people of Victorian era used to find the reasons, the factors, the logical means logics behind it. That the logically this might happen or not, this can happen or not. So in this way, they start thinking. लोगों ने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया, चीज़ों के रीजंस देखने शुरू कर दिए, फैक्टर्स देखना शुरू कर दिया कि हाँ कि भाई ये ऐसा हो भी सकता है या ऐसे ही है। So when they got the reason with and they when they use their logics and they came to know that this thing is not true, this thing is true, this is not true, this is true. So in this way they categorize the things and that these things are the myths and these are the reality. So इस तरह से उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। देयर वाज फेस ऑफ बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। अब ये पॉइंट इस तरह से मैं समझाऊंगा कि फेस ऑफ था रिलीजन एंड साइंस का। इसका ये मकसद नहीं है कि जो साइंटिस्ट थे वो डंडे वंडे लेकर आ गए और वहाँ से इनके जो रिलीजन के लोग थे वो भी डंडे लेके आ गए, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जैसे अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की हरकतें देखी जाती हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर डंडे लेके आ जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। सो द थिंग्स वर नॉट लाइक दैट वे। Here, the face-off between science and religion means that there was the scientist who used to ask questions from the authorities of the religion. They used to ask different kind of questions that are how the things happen, like how the evaluation of human take place. They used to argue on the basis of science, whereas the religious people used to give answers through the through the religion, that how the human beings were came in this world, and the evaluation human being, what is the evaluation of human being according to the religion. They used to write their answers, such as if science the some scientists have asked some questions about religion, the faith or anything, then the religious scholars used to answer them with the light of religion, with the light or with the knowledge of religion. So they used to answer them in that way. तो यहाँ से अटैक हुआ, सच सपोज अटैक हुआ रिटन वर्क में साइंस से, यहाँ से उनको डिफेंस किया जाता था। अगर किसी साइंस की चीज़ के ऊपर किसी रिलीजियस स्कॉलर ने सवाल पूछ लिए तो यहाँ से उसको वो डिफेंड करते। तो मीन्स इन दिस वे देयर वाज द फेस ऑफ बिटवीन science and religion, and it was first time ever in the history that the scientists and the religions were writing against each other. They were asking questions and giving explanations, giving answers to each other. This first time ever happened in the history. So ये पहली बार हुआ। अगला, they start asking questions about myths which were related to religion and tried to find answers through science. The people who are educated and the people are the scientists, they start asking questions about the myths which were especially related to the religion, that how this had happened, why this happened, and what are the reasons behind that, and would it is it possible that the things will work in that way. So in this way they try to ask questions, and there was the face off between religion and the science. So I hope that I have made it clear to all of you. So let me
प्लीज़ मुझे लगता है कि यहाँ तक ये काफ़ी हो गया है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं पढ़ा जाऊँगा तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब द थिंग्स। सो मैं आपको इस तरह से करना चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसा पढ़ाऊँ, थोड़ा हो, क्वालिटी हो, आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि बस बोलते जाऊँ और आप सारे मीन्स सर के ऊपर से चला जाए। सो दिस इज़ नॉट माई पर्पज़। द पर्पज़ बिहाइंड दिस लेक्चर इज़ दैट आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, आपको उस टाइम की सोसाइटी का पता चल जाए कि सोसाइटी की किस तरह से सोसाइटी थी, उनमें क्या क्या चीज़ें होती, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कैसी मैंटेलिटी थी, कैसी मैंटेलिटी पहले थी, फिर क्या क्या चेंजेस आए। तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मेरा यही कोर जो रीज़न है, जो सिग्निफिकेंट रीज़न है, वो यही है कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं नीचे वाली सारी स्लाइड्स अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं तो कर दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी रेन प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोरोना वायरस के इश्यूज़। सो और स्टूडेंट्स के इश्यूज़ अलग से हैं, वी नो दैट। फिर अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है, सो दे विल से दैट टीचर हमारे ऊपर कोई रहम ही नहीं कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हमें दे रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। So in next lecture I will start from the characteristic number 7, and I will try my best to wind up this whole topic, the Victorian age, in coming lecture inshallah. See you all, bye.